Yesterday we are able to finish our unit number third, capital structure theories. Now we will come to our unit number first. Okay? So this is the only theory related unit, your first unit. So let's start with your first unit, financial planning and shareholder value. Are you able to see the PPT, student? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is your syllabus. We are going to study in this unit 1, overview of financial planning, long-term, short-term sources of finance, financial statement including fund flow, cash flow statement, importance of cash flows, concept of financial distress, shareholder wealth, managerial behavior, growth, value, the concept of the concept and feature of value-based management, economic value added, meaning components, advantages, disadvantages, and calculation of economic value added (EVA). Okay. So in this syllabus, we are supposed to have the numericals on two topics: fund flow cash flow statement and calculation of economic value added. Okay. So we will take the numericals on how to prepare the fund flow cash flow statement. I will take 1 and 2 numerical on fund flow and cash flow, and various numerical on economic value added. Okay. So this is your syllabus, and there will be a 2 numerical topic: fund flow cash flow and economic value added. So theory part we just completed today itself, and tomorrow we will start the numerical on fund flow and cash flow basis. Okay. So financial planning. So we all know in means this is our third semester, but you already have the management accounting and financial management in first and second semester only. So we know the financial planning. Okay. So financial planning means money management or anything related to our finance. Okay. Or money management, it will be related to our income, expenses, investment. Okay. So whatever the planning we do with our income, money, our investment, that come into the financial planning. So financial planning is a step-by-step approach to meet one's life goal. Financial plan acts as a guide as you go through the life journey. Essentially, it helps you in control your income, expenses, investment, such that you can manage your money and achieve your goal. Okay? So this is a brief introduction about financial planning. Again, we need to study one definition related to the financial planning. So financial planning is a process of estimating the capital required, determining its competition. It is a process of framing the financial policy in relation to procurement, investment, administration of funds of one particular enterprises. Okay? So broad concept of financial planning, if we consider one company or enterprises, so it is a process of estimating the capital requirement, how much capital we required it. We determining into means the company should come stay into the competition, he should cope up with the competition. It is a process of framing the financial policy in relation to the procurement. Procurement म्हणजे procure, to arrange the money, to procure it, to raise the fund, investment the fund, and administration of the fund of any particular enterprises. The objective of financial planning
determining the capital requirement, determining the capital structure, framing the financial policies. These are the, I think these are the three major objective of the financial planning. We do the financial planning to determine the capital requirement. How much capital company required for next 3 months, for next 6 months, for 1 year, for 3 years, for 5 years, for next 10 years. So how much capital we required in short term purpose, in long term purpose and in middle term purpose. Okay? So financial planning first objective is determine, the financial manager has to determine how much capital company required for the 15 days, for the 1 month, means for the go on till the 10 years or 10 years and above also. Okay? So determine the capital requirement. This depend upon the factor like cost of करंट असेट एंड फिक्स असेट. ठीक है, मुझे करंट असेट मैनेज करनी है तो उसके लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगने वाली. करंट असेट्स मींस योर वेजेस, bank balance. So it is all your current assets. So how you are managing, how much money you require, how much capital you require to manage your current assets or current expenses and your fixed assets. Promotional expenses, long range planning. ठीक है, so these are the factors which determine to determine the capital requirement, determining the capital structure. Just a second, student.
Hello, student. Hello, sorry, student. I'll keep you wait. Sorry. So I already shared the PPT. Yes. Yes, students, are you there? My voice Yes, is ma'am. Yes, ma'am. audible. Okay. So objective of financial planning. Yes, thank you. Objectives of financial planning. So first objective of financial planning is to determine the capital requirement. So how much capital particular company require for a short term and long term requirement for working capital to meet the working capital expenses or to meet the capital budgeting expenses. Okay? So both we required the how much capital we require in coming future or in coming days for next 10 days or for next month, for next 3 months, for next 6 months. So manager has to do the financial planning according to this. He should know that key in coming days how much capital company require, what are the expenses company going to incur in coming 1 month, in coming 2 month or 3 months, for 10 years also. Okay? So beforehand he should do like that planning. So capital requirement have to up, looked with both the aspects, the short term and long term requirement. Okay? The next important objective of financial planning is to determining the capital structure. Okay? So we already study the what do you mean by capital structure, and we study so many theories regarding the capital structure. So capital structure is a composition of the capital. So we have the various sources of finance. So company have so many sources of finance. So company can raise, means financing option company के पास बहुत सारे, means company can raise their fund through equity, through preference shares, through debentures, through long venture capital, through asset leasing, hire purchase. There are so many options. So which option should company select? And the proportion, means how much capital should raise through the equity, how much capital should raise to the debentures, how much capital we should go for the bank loan. So that is mean by determining the capital structure. So capital structure is a composition of the capital, relative kind and proportion of capital required in the business. सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या कि सबसे पहले मैनेजर को ये डिसाइड करना कि कितना कैपिटल लगने वाला है. ठीक है, वो भी अलग अलग कैटेगरी का, मतलब 15 दिन, नेक्स्ट 15 दिन के लिए कंपनी को कितने कैपिटल की अरेंजमेंट करनी, कितना फंड लगने वाला है, उसके बाद 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, वो पूरा टाइम फ्रेम में उनको कैपिटल कितना लगने वाला है वो एक, एंड कैपिटल जितना लगने वाला है वो कहाँ से रेज करना है. ठीक है, विच सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कंपनी शुड रेज टू मिनिमाइज इज कॉस्ट टू मैक्सिमाइज इज वैल्यूएशन. ठीक है, सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए एंड ईपीएस बढ़ना चाहिए, कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर बढ़ना चाहिए. तो उस हिसाब से उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए. ठीक है, सो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन द बिजनेस, दिस इंक्लूड्स द डिसीजन ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहला डेप्ट इक्विटी रेशियो उनको डिसाइड करना है. डेप्ट मींस बोरोड कैपिटल, इक्विटी मींस ओन कैपिटल, कितना खुद से कंपनी को खुद खुद के ओन कैपिटल कितना रेज करना है और बोरोड कैपिटल कितना रेज करना है फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ठीक है, फ्रेमिंग द फाइनेंशियल पॉलिसीज. ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग में और एक आएगा कि फ्रेमिंग द फाइनेंशियल पॉलिसी विथ रिगार्ड्स टू कैश कंट्रोल, लेंडिंग, बोरोइंग. ठीक है, मतलब हमने हमें बोरो करना है तो किस डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करके बोरो करना है, किससे बोरो करना है, मीन्स हाउ मच मनी वी बोरो एट व्हाट इंटरेस्ट रेट. ठीक है,
किस इंटरेस्ट रेट में हमें बोरो करना है या लेंड करना है, पैसा किसी को लेंडिंग में देना है तो वो कितना देना है, किसको देना है, उसकी फॉर्मेलिटी क्या है, उसकी हायरार्की क्या है. मुझे इफ आई वांट टू बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक और any other investors or any other borrower, so what will be the terms and conditions procedure for the company to borrow the money from one of the borrower or to lend the money. और कैश कंट्रोल मतलब कैश समझ लो, एक बिल सैंक्शन करना है, एक्सपेंसेस सैंक्शन करने, तो उसमें कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करने हैं या वो प्रोसेस कैसी रहेगी. ठीक है. सो फ्रेमिंग द फाइनेंशियल पॉलिसीज, इसको फाइनेंशियल पॉलिसीज उनके उस पर्टिकुलर कंपनी के रिलेटेड उन्होंने सारे पॉलिसीज उन्होंने फ्रेम करने चाहिए या बनाने चाहिए. ठीक है. सो दिस इज मीन बाय द दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल प्लान. The financial manager ensures that source financial resources are maximally utilized in best possible manner, at least cost, in order to get the maximum return on investment. ठीक है. सो उन्होंने वैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज करना चाहिए कि दिस विल लीड्स टू मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होनी चाहिए एंड द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर और आरओआई या उनका ईपीएस बढ़ना चाहिए. ठीक है. So these are the objective of the financial planning. What do you mean by importance of financial planning? ठीक है. So financial planning is the process of framing objectives, policy, procedure, programs, budgets regarding the financial activities of a concern. ठीक है. So financial planning means what? Is a process of framing the objectives, policies, procedures, programs, budgets. ठीक है. बजट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द फर्म. कोई भी कंपनी में कुछ भी मनी रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, फाइनेंस फंड रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, उनकी प्रॉपर प्रोसीजर, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी पॉलिसीज या उनके प्रोग्राम्स, वो उनके रिलेटेड बजट्स. ठीक है. उनको वो सारे प्रोसेस या फ्रेम करने वो सारे. ठीक है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द ऑब्जेक्टिव एंड अदर थिंग. This ensures the effective, adequate financial and investment policies. ठीक है. So financial planning आपका इंश्योर करना चाहिए कि effective and adequate financial and investment policies इन्होंने फ्रेम की. ठीक है. So importance can be outlined as follows. Adequate fund have to be insured. ठीक है. जो adequate means पूरे जितना चाहिए उतना ही फंड का अवेलेबिलिटी उन्होंने करना चाहिए. एक्सेस फंड और कम फंड नहीं. adequate fund should be insured. Financial planning helps in ensuring the reasonable balance between outflow and inflow of the fund so that stability is maintained. ठीक है. फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करनी चाहिए कि देयर विल बी रीजनेबल बैलेंस विद कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो. ठीक है. मतलब ज्यादा ही बहुत दिनों तक सिर्फ कैश एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस हो रहे, कैश आउटफ्लोज ही हो रहे हैं, मगर इनफ्लो कुछ नहीं आ रहा है. ठीक है. सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो, फंड आउटफ्लो, फंड इनफ्लो. ठीक है. तो ये स्टडी करने के लिए वी विल स्टडी द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है. उसमें हमें ये हेल्प करेगा, ये इम्पोर्टेंस, ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए. ठीक है. So there should be a balanced cash inflow and outflow of the fund to maintain the stability. Financial planning ensures that supplier of the fund are easily investing in company which exercise the financial planning. ठीक है. सप्लायर मतलब सप्लायर, who are the supplier means हम उनसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं या कुछ प्रोडक्ट वो लोग हमें सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. जो भी लुब्रिकेंट या जो भी प्रोसेस में हमें लग रहा है वो सारे वो लोग ऑन क्रेडिट बेसिस पे सप्लाई करते हैं और 30 डेज के बाद हमें उनको पेमेंट करनी है या 15 डेज में. व्हाट विल बी द क्रेडिट पॉलिसीज. तो सप्लायर ऑफ द फंड इजीली इन्वेस्टिंग इन द कंपनी विच एक्सरसाइज द फाइनेंशियल प्लानिंग. मतलब जो हम सप्लायर्स
के थ्रू जो रॉ मटेरियल्स वगैरह वगैरह ले रहे या फंड जो इन्वेस्ट कर रहे सप्लाई कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ भी रॉ मटेरियल सप्लाई करने में, उसमें अच्छे से उन्होंने इजीली इन्वेस्टिंग अच्छे से प्रॉपरली करनी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन मेकिंग ग्रोथ एक्सपेंशन प्रोग्राम विच हेल्प इन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। So it will help the making growth expansion plan. So it will help the long term survival या long term वो कंपनी अच्छे से चलेगी और long term profitability वो maintain कर पाएंगे। Financial planning reduce uncertainty with regards to changing the market trend which can be faced easily through the enough fund। ठीक है, हमने इन फोर हैंड फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने कर ली कि मुझे एक महीने के बाद ये फंड लगने वाला था, वो बराबर एक महीने के बाद वो फंड की अवेलेबिलिटी मैंने कर दी। सो इट विल रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। ठीक है, समझ लो उसी टाइम कुछ मार्केट में ट्रेंड या मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हो गई कि फंड इजीली अवेलेबल तब नहीं हो रहा है, या अवेलेबल मुझे फंड अवेलेबल हो रहा है मगर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में अवेलेबल हो रहा है। बिफोर हैंड मैंने फंड अवेलेबल करके रख दिया, देन आई कैन डील विद द मार्केट ट्रेंड। ठीक है, जो भी मार्केट में जो अप्स एंड डाउन है, जो भी ट्रेंड आ रहा है उसमें अनसर्टेनिटी में कुछ रिड्यूस कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ दिस financial planning। Financial planning helps in reducing the uncertainty which can be hindrance to the growth of the company. It helps in ensuring the stability, profitability in concern। ठीक है, so these are the importance of financial planning। ठीक है, so objective of the financial planning and importance of the financial planning। Now we just note down what are the sources of finance। ठीक है, सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। कंपनी को कैपिटल चाहिए मगर किस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से कंपनी कैपिटल रेज कर सकता हो, मार्केट में कितने सोर्सेस अवेलेबल है कि कंपनी कैन रेज देयर फंड। ठीक है, सो इट हैज कैटेगराइज और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से these are the classified the sources of finance। for example long term sources of finance जो 10 years and above period के लिए कंपनी को फंड की जरूरत है। ठीक है, so that called as a long term sources of finance। middle means 3 years to 10 year या 5 years to 10 year। short term sources means within 1 year or 1 to 3 years। ठीक है, so these are the sources of finance according to the time frame। sources of finance according to the ownership and control। ठीक है, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ठीक है, ओन कैपिटल मीन्स हम लोग उनकी पूरी कैपिटल ओन कैपिटल है तो वो हम रूल करेंगे। बोरोड कैपिटल मतलब वो जो बोरोवर है उनकी ओनरशिप और उनका कंट्रोल उसमें रहेगा। ठीक है, सो ओन कैपिटल अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप एंड कंट्रोल, बोरो ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। according to the generation means according to the sources of generation means internal sources external sources। ठीक है, मतलब इंटरनल सोर्सेस से ही मैंने मेरा कैपिटल रेज कर दिया या जनरेट कर दिया, या एक्सटर्नल सोर्सेस से मैंने अपना कैपिटल रेज किया। ठीक है, सो दीज आर classification of sources of finance। first we study the sources of finance according to the time period or time frame। सो इन दैट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इस कैपिटल की जरूरत हमें 10 इयर्स एंड अबाउ पीरियड के लिए लगने वाला है। ठीक है, मतलब मुझे आज जो कैपिटल रेज कर रही हूँ मुझे वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मुझे वो फाइनेंस या वो कैपिटल मुझे जरूरत है कंपनी के लिए। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, preference capital, preference shares, retain earning and internal accrual, debentures, bonds, term loan from financial institution, government, commercial banks, venture funding and asset securitization। ठीक है, शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल तो हमें सब पता है। ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल मीन्स व्हाट कि इक्विटी शेयर्स मीन्स व्हाट। ठीक है, ये एक ही इसमें बोला जाता है शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर्स।
So company require the capital in a huge amount. Okay? So company cannot approach only selected few and three financer. Company cannot go to them only to raise their finance. ठीक है, there is so much risk is involved. जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, समझ लो उनको 10 करोड़ कैपिटल की जरूरत है. ठीक है, अभी वो लोग एक 10 करोड़ कैपिटल हम एक ही बंदे से या दो या तीन या चार सिलेक्टेड बंदे से रेज किया तो देर इज अ रिस्क. एक तो वो लोग देंगे नहीं. ठीक है, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट एंड जो मिडिल पर्सन है या पब्लिक नॉर्मल जनता है, उनको वो बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है मगर उनके पास बड़ा कैपिटल नहीं है. ठीक है, सो ये दोनों जो प्रॉब्लम है इनको मीट करने के लिए व्हाट आवर सेबी गाइडलाइंस या जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंपनी कैन रेज देयर कैपिटल, इशू द शेयर्स. ठीक है, अभी 10 करोड़ कैपिटल के छोटे 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 पार्ट्स कर दिए, मतलब 1,000 रुपए का एक शेयर. ठीक है, सो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,000 यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, एंड अगेन देर आर द कैटेगरी, ए ग्रेड कैटेगरी शेयर, बी ग्रेड, सी ग्रेड. ठीक है, जिनकी ए ग्रेड मतलब वो शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बी ग्रेड शेयर मीन्स उसकी वैल्यू थोड़ी कम है, सी ग्रेड शेयर मतलब वो 500 1000 या उससे कम प्राइस में शेयर अवेलेबल है. ठीक है, सो व्हाट देन विद दिस, ये 10 करोड़ कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब शेयर्स में डिवाइड कर दिया. समझ लो 1,000 का एक शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 1,000. सो कंपनी कैन इशू दिस शेयर्स टू द पब्लिकली थ्रू आईपीओस और थ्रू द फर्स्ट टाइम है तो उनको इनिशियल पब्लिक ऑफर से ही उनको प्राइमरी मार्केट में ही उनको वो इशू करने पड़ेंगे एज पर द सेबी गाइडलाइंस. ठीक है, कंपनी कैन नॉट गो टू द IPOs and sell their share to directly to the public. Company has to hello student, sorry, there was a I suddenly exit the meeting, I don't know.
So hello student, am I audible now? माझा आवाज येतोय Yes, आता? ma'am. ओके. आणि ही पीपीटी दिसतीये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो कुठे होतो आपण, म्हणजे कुठे डिस्कस करत होते मी? लॉंग टर्म सोर्सेस ऑफ फायनान्स ना? Yes, ma'am. Okay. So long term sources of finance, first is equity share and share capital. ठीक है? So शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर मीन्स व्हाट, कि नॉर्मल जनता बड़े कंपनीज की इन्वेस्टमेंट कर पाए, उसकी वजह से बड़े बड़े कैपिटल के अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस पार्ट को शेयर बोला जाता है. ठीक है? अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है? सो अगेन इक्विटी शेयर्स में भी बहुत सारे टाइप है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी बहुत सारे टाइप है. ठीक है? इक्विटी शेयर्स मीन्स दे आर द अल्टीमेट ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है? सो दे आर द ओनर. इक्विटी शेयर्स जो परचेस कर लेता है कि दे विल गेट द वोटिंग राइट्स, दे हैव राइट टू अटेंड द मीटिंग, दे हैव राइट टू वेरीफाई एनी बुक्स ऑफ कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कोई भी देख सकते, कभी भी वो, दे हैव राइट टू अटेंड द एवरी मीटिंग, दे हैव राइट टू वोट. ठीक है? अल्टीमेट द इक्विटी शेयर होल्डर आर द अल्टीमेट ऑफ ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. The preference share are also, they didn't get, they will get only the preference right to get the dividend before the equity shareholder. कंपनी में जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? इफ कंपनी अर्न्स सम प्रॉफिट. ठीक है? सो इफ कंपनी अर्न्स द प्रॉफिट, देन कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है? if any in any year company not able to earn any profit, if company suffer the losses, so company don't have the right to उस ईयर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं. ठीक है? इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. सो earnings about of this equity shareholder and preference shareholder totally depend upon the profit. If company able to earn the profit in particular year, that year this shareholder will liable to receive the dividend only. ठीक है? And this is the one benefit of the equity shareholder and preference shareholder. Another benefit they will get if they buy the share of particular company and that company is listed in stock market, any of the stock market that company is listed, then they can share their, they can buy and sell their share on the stock market. Okay? They will get the price fluctuation benefits. If they buy that particular share in 100 rupees and the value of share has increased in stock market, it will be 110, then they will get the benefit of 10 rupees as while they exchange their share or sold their share into the stock market. So these two benefits will get the equity shareholder. What is the benefit of for the company to raise their capital to equity shares and preference shares? So this, whatever the capital they raise through these shares, that they will not refundable. Means एक बार कंपनी ने इक्विटी शेयर से रेज कर लिए, they will become the lifetime owner of that particular company. वो स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब वो शेयर का ओनर बदल जाएगा. ठीक है? मतलब दूसरा ओनर आ जाएगा, मगर उनको वो कैपिटल रीपे कभी भी नहीं करना है कंपनी को. सो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर से जो कैपिटल रेज हो रहा है, दैट इज देयर लाइफटाइम कैपिटल और देयर ओन कैपिटल. ठीक है? बिकॉज दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी ने डिविडेंड जितना प्रॉफिट अर्न किया उसमें से ही इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है. कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि इस ईयर लॉस ही हुआ है सोने, सो दे विल डोंट हैव द कि फिक्स फाइनेंशियल बर्डन टू पे द डिविडेंड. इट विल डिपेंड ऑन द हाउ मच प्रॉफिट कंपनी अर्न. ठीक है? So this is the benefit of capital raised to the equity share and preference shares. The retained earning or internal accrual. Retained earning means this is the internal sources of finance and this is also the long term sources of finance. ठीक है? समझ लो, if company have some expansion plan. ठीक है? After 5 years company has planned that कि हमें एक branch
अपनी नागपुर में ओपन करनी है। जो भी हमारी कंपनी है उसका एक सेल्स ऑफिस हमें नागपुर में भी ओपन करना है। तो उस सेल्स ऑफिस के लिए इतने पैसे लगने वाले। सो आफ्टर 5 years आई हैव माई एक्सपेंशन प्लान टू ओपन वन ब्रांच इनटू द नागपुर। ठीक है। सो हाउ मच अमाउंट आई विल रिक्वायर? सो बिफोर हैंड आई विल ट्रांसफर इफ आई रिक्वायर दैट 10 lakh rupees for to open a new branch in particular in Nagpur city. So this 10 lakh I required after 5 years. So what I do the provisioning beforehand. I create one retained earning account to expansion plan to open the new branch in the Nagpur city. So इसमें लिए मुझे 5 लाख लगने वाले. So I will what I do कि 5 लाख divided by 5 years. तो every year मुझे उतना amount उस retained earning में ट्रांसफर करना है। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज ए रिटेन अर्निंग। तो जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर माय एक्सपेंशन प्लान टू मीट माय एक्सपेंशन प्लान कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए रिटेन अर्निंग। ठीक है। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है। ये डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स हमने बैंक लोन जैसे ले लिया ना, तो वही फीचर्स यहाँ है। सिर्फ कंपनी कंपनी लोन पब्लिक से ले रही है। ठीक है। तो इस हिसाब से दैट इज मीन बाय डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स कि उनका एक फिक्स टेन्योर रहेगा कि 5 साल की ये बॉन्ड रहेगी, उसके बाद ही आप लोग इसको सोल्ड आउट कर सकते हैं, या कंपनी आपको रीपे करेगी 5 साल के बाद जो अमाउंट बॉन्ड की। अगेन दिस बॉन्ड एंड डिबेंचर्स आर ऑल्सो लाइक अ शेयर। ठीक है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट रहेगा वैसे ही डिबेंचर्स और बॉन्ड का सर्टिफिकेट रहेगा। वो भी अमाउंट 1000 से 5000 या 5000 से 10,000 के रेंज में ही रहती है बॉन्ड। सो नॉर्मल जनता भी इस डिबेंचर्स और बॉन्ड को परचेस कर सकती है। बट द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड बॉन्ड इज शेयर्स इज नॉट रिफंडेबल अमाउंट की कंपनी को कभी भी शेयर्स की अमाउंट रिफंड नहीं करनी। मगर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आर रिफंडेबल, मतलब वो मैच्योर हो जाने के बाद कंपनी को उस बॉन्ड होल्डर या डिबेंचर्स होल्डर को रीपे करना पड़ेगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जो भी वो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। ठीक है। टर्म लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक। ठीक है। जो नॉर्मल टर्म लोन है जो हम बैंक से ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस टू द कंपनी। वेंचर कैपिटल। ठीक है। वेंचर कैपिटल मीन्स व्हाट की जो शुरू शुरू में कंपनी एक स्टार्टअप कर लिया, तो शुरू शुरू में जो कैपिटल जो इनिशियल फर्स्ट टाइम कंपनी हो रही है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्टर हो गई है तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने की पूरी जो गवर्नमेंट के एज पर द कंपनी एक्ट 1950 में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरे रजिस्ट्रेशन शुरू शुरू में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बहुत ह्यूज रहते। तो वो शुरू के एक्सपेंसेस मीट करने के लिए वेंचर फाइनेंसिंग या वेंचर फंड करके हम लोग कैपिटल रेज कर सकते हैं। ठीक है। अभी एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है। ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन बहुत सारे बच्चों को नया है, समझ में नहीं आता है। सो व्हाट आई डू, देयर इज अ यूट्यूब वीडियो। So I request you student to listen this YouTube video. It is related to your asset securitization. It's what do you mean by asset securitization? So इस बंदे ने ये बहुत अच्छी तरह से explain किया है। First we listen this video, then I will explain the same thing what he is saying. ठीक है। So just one of the student please let me know कि this video is audible. ठीक है। मैं मेरा म्यूट करती हूँ और ये वीडियो आपको ऑडिबल है या नहीं मुझे ये सिर्फ बता दीजिए। स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. दिस वीडियो इज ऑडिबल स्टूडेंट? No, ma'am. नो और यस? No. राइट नाउ
Okay, you are able to see only the PPT. Just a second. This is share. Now, Yes. अभी अभी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट वीडियो और ऑडियो दिसतोय बरं ऑडियो नाही आहे योगेश येतंय का ऐकू ऑडिओ नाही येते बरं एक मिनिट पण मॅडम लिंक परवाच भेज दो ना हा हमको. मी लिंक पाठवते लिंक तर पाठवेन मी पण ना ऑडिओ नाही येते का कारण की आता परवाच्या एका क्लासमध्ये मी शेअर केलं तर त्यांना ऐकू आलं रे टीम्स मध्ये ऑडिओचे सेटिंगचं ऑप्शन आहे का डिव्हाइस सेटिंग मध्ये का हा हा बरं एक मिनिट हा कम्प्युटर इन्क्लूड द कम्प्युटर साऊंड ठीक आहे तो मी चालू केला शेअर कंटेंट मध्ये नंतर कंटेंट ओनली नंतर काय टर्न ऑन द कॅमेरा टू सिलेक्ट लेआउट नंतर टर्न ऑन द कॅमेरा टू सिलेक्ट द लेआउट ऍड बॅकग्राऊंड बरं मग मी शेअर कंटेंट ऑन द कॅमेरा शेअर नॉर्मल स्क्रीन शेअर करू ना विंडो शेअर नको करू बर आता मी ना स्क्रीन शेअर केली ठीक आहे आता आता येतो आवाज बरं, एक मिनिट. हा हा तो मी केलाय ना ऑन इन्क्लूड द कम्प्युटर साऊंड ना मग तो ऑन ठेवू का ऑन केला मी हा हा तो ऑन ठेवलाय आता येतोय आवाज योगेश अरे बाप मी घरून पर मागच्या आठवड्यात घेतलं होतं तेव्हा झालं होतं बरं ठीक आहे स्टुडंट आपण पुढचं लेक्चर पुढे कंटिन्यू करू ठीक आहे आता ह्या पीपीटी मध्ये ॲसेट सिक्युरिटायझेशन ठीक आहे ही कन्सेप्ट आपण उद्या परत एक्सप्लेन करू याच्यासाठी एक युट्यूब व्हिडिओ आहे you just put on the YouTube video search option the asset securitization MBS MBS ABS किंवा याचं काय अश्विन बजाज अश्विनी बजाज च्या सबस्क्रायबर ग्रुपमध्ये ॲसेट सिक्युरिटायझेशन बद्दल एक व्हिडिओ आहे तो पूर्ण नाही ऐकायचा तुम्हाला त्याने बरंच मोठं दिले 15 मिनिटापर्यंत तरी तुम्ही तो एकदा ऐका ठीक आहे का ग्रुपवर लिंक शेअर करू व्हॉट्सअप ग्रुपवर पण लिंक टाकते मी ठीक आहे ठीक आहे चालेल स्टुडंट आपण पुढच्या लेक्चरला कंटिन्यू करू हे ठीक आहे
Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.